वेलकम बैक टू नेक्स्ट ब्लॉग गाइस। तो फिर आज हम सब ब्लॉग हिंदी में करेंगे। तो फिर आज हम जा रहे हैं दार्जिलिंग बाजार। आज कुछ काम करना है। इधर आमा भी तैयारी हो रहा है। गाइस बहुत देर हो चुका है और लगता है गाड़ी भी नीचे नहीं है। और ये देखिए, ये आज बहुत अलग ही दिख रहा है, बहुत तरुण ही दिख रहा है ये। लेकिन क्या करूं, बस क्लास 4 ही पढ़ता है अभी। देखिए अभी आकांक्षा के लिए मम्मी बहुत सारा चॉकलेट लाके आया है। और ये क्या करती है, ये खाता नहीं, ये खाती नहीं है, बस दिखावा करती है कि ये खा रही है। देखो मुंह में डाला है, लेकिन अभी थोड़ी देर बाद गाइस जस्ट सी दैट गाइस हमारी रील्स बना रही है। और इधर आकांक्षा है और टाइम अभी हो रहा है, कितना हो गया टाइम बोलो, मुझे नहीं आता टाइम बोलने को। वो देखिए का काम जो क्या है बोलता है, कल बड़ा का बरसी और इसलिए हम लोग सामान खरीदने जा रहे हैं। और टाइम बहुत देर हो चुका है आज के लिए, और लगता है आज भी गाड़ी नहीं मिलेगा, पैदल ही जाना पड़ेगा लगता है। और देखते हैं गाड़ी है या नहीं। पछाडि हो गाडीको स्ट्यान्ड अगाडि जान्छु। अन्त त्यो सामान किन्नु छ जस्तो कि खाली हो, खाली तो नहीं लग रहा है। अभी भीड़ होने शुरू हो चुका है और चलिए चलिए हेलो एवरीवन, मैं भांजा जो यूट्यूब चैनल चला रहा है उसको सब्सक्राइब करना है, क्योंकि अभी अभी दार्जिलिंग का वो ठंडी ठंडी हवा के सामने इधर उधर घूम रहा है। अभी हम देखिए ओरेंट बोलता है, ओरेंट में पूरा भीड़ है, मतलब कपड़ा वगैरह बेच रहा है। और क्या बोल रहे जो मेरा हैंडसम है ना मनीष, हैंडसम मनीष है, उसका चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हो सके तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और क्या बोलो, इतने बोल सकते हो। अभी उसके बाद थोड़ा बहुत कॉमेडियन वीडियो लेके आपके सामने बानिश के साथ आऊँगा, ठीक है? ओके बाय, थैंक यू। यो कति हो र फोन very aggressive. He was very aggressive while doing his prank, and maybe he was also scared, the man, the guy who got pranked. Guys, they're getting close to each other. It is getting very cold right now. The mouth is very shivering just now. क्या कह रहा है, ब्लड बहुत है और अच्छा मौसम में ठंडी हवा लगी। रात में सारे ब्लॉग कर रही है, ब्लॉग आज करेगा, परसों एडिट, फिर से परसों पोस्ट करेगी। और
Like भुजाको सब्जी and fish. Guys, I'm here to something natural, and as you can see behind me. Oh, यो गलीमा चाहिँ एउटा पूजा खाने भन्छ चाहिँ ऊ आएको साथै लेस बाँध्न आउँदैन रहेछ हो You can see something is there. Guys, अब माछा किन्दा छु हामी हैन माछा चाहिँ एकखेप अब खोलामा गएर पक्रिनुपर्छ हो आमाले पक्रिन्छ माछा चाहिँ आफ्नो टोपी बोकेर कुन चाहिँ खोला गएको तपाईँ माछा पक्रिन्छ हजुर कुन चाहिँ खोला गएको तपाईँ माछा पक्रिन्छ क्वेसन गरेको तैँले चाहिँ फेरि बजेन भएर चाहिँ खोला भन्ने सोचेको त्यस्तो पनि हुन्छ अब हाम्रो माछा किन्छ मासु किन्छ हो सब्जी फर्किदिरहेको छु यहाँ जस्ट टेक अफ भन्दा लिनु थाल्छ अन्त जस्ट सी द क्राउड हुनु एउटै जग्गा यताउता हुन्छ अन्त इन्डिया पोस्ट यहाँ छ एउटा अन्त दार्जिलिङ फेमस अलि दार्जिलिङ फेमस रेस्टुरेन्ट नारायण दास यहाँ छ हो गाइस मसला ससला किनिसक्यो हो अब छ मासु everyone's favorite fresh meat के हो Cause it's full of blood and it frees your heart. It's no longer the same. We need to get out guys माछा पनि भइसक्यो हो अन्त भारी पर्छ माछा पनि भइसक्यो अन्त we are going to take our vegetables र पूजाको सामान let's go पूजाको दोकान यही छ नि त सब्जी लिन्छ पूजा सामान भयो सब्जी दुध दही पनि भयो सब्जी लिन्छ यहाँ है यहाँ त्यही सब्जी मन्डी आएछ सिधा सब्जी तपाईँहरूलाई म सब्जी देखाइदिन्छु होइन यसलाई के भन्छ यसलाई सिबी सोपको साग यो मेथीको साग हो यो डुकु यो धनियाँ यो सिबी ब्रोकोली मेवा आलु के भन्छ च्याउ यो सिबी guys now we are going to buy a birthday gift very special tomorrow but right now we have to buy today because we are not going to tomorrow and tomorrow is जान्छ भोलि अन्त बजारभित्र जाँदैछ त्यही एरिया इज ब्युटिफुल होइन अक्सर घाम लगाइरहेको हो अब नेक्स्ट मै किनौँ ल हामी उयस्तो कलर मन पर्छ किन कलर एउटा This is it for today's video guys. You know the drill. Like, share and subscribe and comment down below. आज भिडियो
अरमान